हेलो। हाँ, हम ठीक का काम कर रहा। अरे मेरा नॉइस सप्रेशन ऑफ था ना, तो वो ऐप मैंने बंद करके रखा है क्योंकि वो वरना बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा स्टोरेज लेता है। एक सेकंड, मैं स्ट्रीम चला के रखता हूँ ना मेरा, एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि मेरा साउंड तो आ रहा है स्ट्रीम पे। बात नहीं, चलो हम आज अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन से शुरू करेंगे। वो है जो कमीशंस करना। ओके, कमीशंस करेंगे पहले। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? ऐप चल रही है, पीसी थोड़ा लैग कर रहा है कि नॉट श्योर। ये देखो चॉपी चॉपी सर। हाँ, तो लैग हो रहा है क्या? बताओ तो मुझे। स्ट्रीम पे थोड़ा चॉपी कनेक्शन आ रहा है, मुझे लग रहा है। फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे हैं कभी कभी, कम फ्रेम रेट है। ये हो रहा है क्या मालूम? कभी कभी मेरे लैपटॉप को थकान आती है। मैंने सोचा था आज नहीं करूंगा, उसके बाद सोचा कि नहीं है भाई, आज 300 करना ही है। कुछ भी कर लो, 300 करना ही है। और मैंने मेरा फेस कैम नीचे शिफ्ट कर दिया कल के स्ट्रीम में, क्योंकि मैंने देखा कि लाइक एसेंशियल कुछ चीज़ें नहीं दिख रही थी। तो यार चैट, लेकिन मेरा फेस कैम जिधर है उधर चैट दिखता है, तो चैट उतना देखने के लिए ज़रूरत नहीं होता। ओके, जाना है भाई। ये तो भाई
छेद के अंदर से जाएंगे क्या? छेद के अंदर गेंशिन का थीम मैंने कहीं पर तो सुना है, लग रहा है मुझे किसी यूट्यूबर के स्ट्रीम पे, स्ट्रीम नहीं मतलब वीडियो पे सुना है, बड़े वाले यूट्यूबर इनफैक्ट, नॉट जेंशिन रिलेटेड। ओके बस लाइक वो मत बोलो कि हाँ क्राइम्स ये तो इन गेम ऑडियो है, सब स्ट्रीम पे सुना देगा। हाँ थोड़ा चॉपी कनेक्शन है क्या? ये था क्या? रिपोर्ट बैक टू यास्मीन। यास्मीन भाई यास्मीन। मैंने स्ट्रीम एलिमेंट्स लगा दिया एक्चुअली, इसी वजह से थोड़ा लैग कर रहा है क्या, आई डोंट नो। चल मुझे एक बार देख लेना तो बैकग्राउंड में कौन से ऐप्स चल रहे हैं। ये चल रहा है, ओ ये इसको बंद कर लेना ना। हाँ ये चल रहा है, जेंशिन चल रहा है, बस इतना ही तो चल रहा है। एक सेकंड रुको तो मुझे वो टास्क मैनेजर खोल के ना कोई डिस्कॉर्ड को बंद कर लेना दे। एक सेकंड रुक जाओ, चलता तो दिमाग खराब करता है भाई वो। ड्रैगन सेंटर एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड और कुछ नहीं है ना। हाँ अभी थोड़ा कनेक्शन ठीक आ रहा है। ओके लेट्स गो। मैं सोच रहा आज ये लाइक जो प्रीमोस वाले कमीशन है ना उसको भी करना है आज वही वो भी कर लेंगे। प्रीमोस आई मीन नॉट प्रीमोस एक्चुअली, ये मतलब हमारा 100 वीडियोस कंप्लीट हो गए भाई। इतनी खुशी मुझे और कभी नहीं हुई। डेंड्रोक्यूलस ले लिया भाई। अरे ये एनिमी है, मुझे लगा कोई और है। इसका लेवल देखो गाइस, एक सेकंड इधर इसका लेवल देखो गाइस, देखो ये कौन से लेवल पे है भाई। देख रहे हो जेंशिन भी क्या क्या करते रहता है भाई आजकल। जेंशिन सुधर जाओ भाई, थोड़ा सुधर जाओ, उल्टे सीधे काम मत करो तो अच्छा है। ये क्या कर रहा हूँ मैं, मेरा सिर मार रहा हूँ मैं। Complete टाइम ट्रायल चैलेंज। एटलीस्ट सुमेरु के अंदर ना चैलेंजेस थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं कमीशन, वरना इनजुमा में सिर्फ मारपीट मारते रहो भाई, सबको धो डालो या फिर बोरिंग खाली चैट करते रहो। इसके अंदर एटलीस्ट कोई कुछ तो अच्छा है। Written in the stars. This is order. This is order guys, okay? Whirling snow. मैं क्यों भूल गया कि मेरे पास ये है। Goes the ship down. Now you're testing my patience.
नो, बट एक्चुअली मुझे अभी तक कोई मेरे पास कोई ब्लैक टैक्सन है. डैमेज अगेंस्ट स्लाइम्स, increase damage against opponents affected by hydro cryo by 20%, increases damage against opponents affected by hydro, affected जो हमने affect किया है उनको ना. wind speed कैसा है? So within 10 seconds after an elemental reaction is triggered, ATK is increased by 24% and elemental reaction is increased by 96. बट ये नहीं चाहिए मुझे. मैं शांगलिंग का देना था. मैं ड्रैगन्स बेन दे देता हूँ इसको और रिफाइन करवा लेता हूँ. क्या बोलते हो भाई? अभी तो यही रहने दो भाई थोड़ी देर. ओके यही रहने दो थोड़ा, बाद में देखा जाएगा. अभी तो इतना ही ठीक है. शिविनावा भी चाहिए होगा. शिविनावा 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 शिविनावा. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have अरे a अरे few अरे 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 references. भाई बहुत ऊंचा है भाई. वो उतना क्लाइंब कैसे करूं मैं भाई? वो बहुत ऊंचा है. उतना खुशी जंथन प्रवीण कुमार, वेलकम टू द स्ट्रीम. वेलकम. ये क्या है? What is this? हाँ रेडियंट स्प्रिंग क्रिस्टल. ये देखो गाइस कितना मोटा और बड़ा है. देखो ये चीज. आते ही म्यूजिक चेंज हो गया भाई. हो पाएगा जंगली. गिरना मत, बस गिरना मत. तू गिरना मत. हो जाएगा हो जाएगा. जंगली ओके गिर गया. कोई बात नहीं गाइस. हेलो. हेलो हेलो. इससे मेरा ऑडियो नहीं जा रहा क्या? हाँ मेरा जा रहा है ऑडियो. खुशी जंथन प्रवीण कुमार, वेलकम टू द स्ट्रीम. आई एम रियली सॉरी अगर मैं उसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ. होप यू गेट 300 सब सून. हाँ उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा. बट थैंक यू. क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? गिर क्यों रहा है? हम काहे गिर रहा है सर? ऊपर चढ़ना है मुझे. अभी मैं अगर आर्कन क्वेस्ट करता बैठा ना तो बोलेंगे लाइक स्पॉइलर दे दे के भर देंगे भाई. व्हाट इज दिस ब्रो? इसे इतना अच्छा फील्ड क्यों है? स्टार्ट करना पड़ेगा क्या मुझे? What is
भाई, ये है क्या? नाइस, अच्छा अच्छा है। ओह, आई गेस इधर से घूम के आना पड़ेगा मुझे। एक सेकेंड, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हार्वेस्ट, ये था क्या भाई? नाइस भाई, पूरा जगह फूली फूल हो गया भाई। वशमृति, वशमृति भाई, सारे इंडियन नेम ले लो भाई, इंडियन नेम ले लो भाई सारे, कुछ भी कुछ भी। क्या, अरे देखो, क्या देखो कितने सारे जहाज है इधर। बाउंस करना है इनके ऊपर। ओके, ये भाई डर लग गया मुझे, मुझे लगा नहीं होगा। हो गया डाउन। ब्रो है क्या, इतने सारे जहाज क्यों है उसके ऊपर? एक से लेकिन वो पोर्ट ऑलमोस्ट तो नहीं लगता, नहीं वो पोर्ट ऑलमोस्ट ही है, पोर्ट ऑलमोस्ट है ना वो। क्या देख रहा हूँ मैं, हाँ पोर्ट ऑलमोस्ट ही है वो। हाँ वो वाला चीज ये वाला है। नेक्स्ट कमीशन कहाँ है, देखते हैं देखते हैं। फ्लाइट कुछ तो है भाई उसका नाम। वे टूटिंग, मैं सीधा इस वाले पे आ गया भाई। Isn't that creature I saw before? अरे वो क्रिएचर गायब हो गया, अरे रुक जाओ, वो क्रिएचर गायब हो गया भाई। क्या? एक से इधर डेंड्रोक्यूलस है, एक डेंड्रोक्यूलस है, को ले जाने दो। ये नीचे, ये हाँ, ये रहा ये रहा ये रहा, नहीं नहीं नहीं, ले ले ले, मिल गया। लेट्स गो, फास्ट था, फास्ट फास्ट है वो। अरे फास्ट एंड फास्ट दोनों सेम है भाई, तो किसको पता है वो फास्ट पे है कि फास्ट कर रहा है वो। फास्ट एंड फास्ट ऑलमोस्ट सेम ही है ना। हम बहुत भूतिया टाइप की जिनिस की बात कर रहा हूँ, या आई नो वो उसका सेंस नहीं बनता कोई भी। ओके, महिड़ा, ये कर ले तो पहले जेथ वाला जेथ। आई नो इट्स बोरिंग, ओके गाइस देखो ये बोरिंग है लेकिन करना पड़ता है, ओके करना पड़ता है।
I know this is too boring. Okay? Stabilize. भाई डैमेज अच्छा दे रहा है जॉम्बी, बहुत ओपी डैमेज था। शर्म कर क्राइम्स। आजा आजा दोनों आजा, अब आजा आजा। हाँ आ गया ना। Take flight. आवाज नहीं आ रही है, आका की आवाज नहीं आ रही है भाई। Solidify. अरे छोड़ दो, गलती हो गई मुझसे। ओके छोड़ दो प्लीज। दोपहर में आया था इधर, लेकिन मुझे सच्ची में नहीं पता इधर से जाना कहाँ है। I really don't know कहाँ पे जाना है भाई इधर से, या फिर इधर है ही नहीं कोई हिडन रास्ता है। नहीं उधर तो रहा वे पॉइंट, इधर तो वे पॉइंट है। गुफा वुफा है क्या नीचे? नीचे कोई गुफा है। हाँ इनके नीचे कोई तो गुफा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्या मालूम भाई। कैसे पॉसिबल, अगर इधर कुछ है ही नहीं तो जाऊंगा कहाँ? 200 मीटर बोल रहा उधर से। तब कुछ भी कर रहा है भाई। कैंसल, यू डोंट नो द सीएस स्टैक। इधर से जाना है इसका मतलब मुझे। इधर टेलीपोर्ट हुआ तो नीचे गया, देन क्या है? Osmanthus wine tastes the same as I remember. हेलो गिव, वेलकम टू द स्ट्रीम। आज स्ट्रीम में मंदी चल रही है। अरे आपको कुछ पता है इसके बारे में? इधर तो जा नहीं सकता हम। कैसी चल रही है ग्राइंडिंग? बहुत टट्टी चल रही है ऑनेस्टली बताओ तो, क्योंकि ये देखो ये दरवाजा तो खुल नहीं रहा। मेरे को कन पता है, कन मतलब कोरोना। कौन सा कोरोना, क्या बोल रहे हो आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से मुझे खुद एक चीज तो ये पता नहीं चल रही कि भाई इधर मैं जब गया ऊपर है कि नीचे है ये। मैं ऊपर जब गया उधर कुछ नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था इधर। ये कैसे करूं मैं? मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है इस पे। ये देखो इधर कुछ तो है। ओके अब मैं जब इधर ऊपर से गया तो कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता अंडरग्राउंड इधर से कुछ होगा, लेकिन अंडरग्राउंड हो भी सकता है। I mean I wish I can help you with this quest. आपको पता है ये कैसे करता है ये क्वेस्ट?
वेस्ट क्या बोल रहा हूँ? कैसे जाऊँ मैं? चल ऊपर से देखता है। इसका नशे है भाई इसके। ऐसा तो कुछ नहीं, इधर से घूम इसके अंदर से घूम घूम के जाना है। ये भी हो सकता है भाई, ये पूरा कंप्लीट तो नहीं किया था ना मैंने। हाँ देखो देखो ऊपर ऊपर देखो। जंगली को ड्रैगन्स बेन क्यों? जो भी मिला लगा दिया और कुछ नहीं बस। ड्रैगन्स बेन का पायरो एंड ये करायो का ये है ना, तो इसी वजह से उसका एडवांटेज लगा तो मैंने टेम्पोररीली उसको पकड़ा दिया कि हाँ कुछ नहीं करने से कुछ तो करे तो। हाँ ये देखो कम हो रहा है। ब्लैक टैसल दो, ब्लैक टैसल दे दूं? ओके ब्लैक टैसल दे देता हूँ। ब्लैक टैसल क्या है देखते हैं। इंक्रीज द डैमेज अगेंस्ट स्लाइम्स, ये क्यों है? ये क्या भाई? आउच आउच। हाँ देखो, ये देखो डिस्टेंस कम हो रहा है। Solidify. Whirling snow. सारे जंगली वाले ब्लैक टैसल ही देते हैं। सारे जंगली वाले देते हैं ना, मेरे जैसे अल्ट्रा लेजेंड लोग तो नहीं देते ना। ओके बहुत टट्टी जोक का पता है मुझे। एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। एक्सक्लेमेशन आर्ट लाइक क्यों लिखा? हाँ आगे गाइस ये देखो। Decided by destiny. मैंने आर्ट कॉन्क्वेस्ट कर लिया क्या गिव भैया? बताओ बताओ। आर की ऑन क्वेस्ट कर ली? Don't have enough space for this. बेइज्जती बेइज्जती मेरी बेइज्जती करोगे तुम? मेरी बेइज्जती। हाँ मिल गया। ये देखो वो देखो कौन है वो? कौन है तू? पहले क्यों भैया ये मेरी ऑडियो सब दिखा रही है। बताओ व्यू जी। कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग एंड ओपन द डोर। ओके पर जाना है मुझे इसका मतलब। उड़ी बाबा देखो गाइस। खुल जाशिम से हमारे ये नॉलेज की तरह खुल गया। देखो कितना ओपी है भाई, दिखता तो ओपी है भाई। क्या इधर ये टूटेगा क्या? तो सच्ची में नहीं टूट रहा है। अरे मटका की क्या है भाई? फेविकॉल से लगाया था लगता है। भाई डेथ का डर लग रहा मुझे बहुत। अब देखो
हाँ मार तू, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, तुम मुझे मारो पीटो कुछ भी कर लो, I don't care. हाँ I'm Giga Chad, okay? I'm Giga Chad, I'm Zhongli, okay? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. Certainly worth the extra mile. I don't care. तू मार, हाँ मारना. I don't care, okay? Take flight. Yeah. I'm ultra level Giga Chad, okay? मैं सिर्फ Zhongli shield spam करता हूँ. मार बे. इससे होगा क्या भाई? उबे, what the? अरे ये कोई इजिप्शियन है भाई. ये इजिप्शियन कुछ सील्स टाइप की है. इजिप्शियन लोगों का ऐसे ही होता है भाई. हाँ जैसे लोगों ने बताया था कि सुमेरु का अपडेट थोड़ा ये थोड़ा वो टाइप का होगा, लाइक थोड़ा सुमेरु थोड़ा इंडियन थोड़ा लाइक ईस्टर्न एशियन ऐसा कुछ टाइप का. अरे बाबा ज्यादा कर रहा है भाई तू, अब ज्यादा कर रहा है. Now what to do? What the? Yes, अरे nice bro. क्या है भाई, ये अलग कुछ तो है. One man's stone is another man's gem. One man's stone, another man's. The fuse is lit. गल जा तू. चलो एक ये लग जाए, दूसरा ये लग जाए. हैं? ये अरे गायब हो गया. हीरो एक्सटी हीरो वेलकम टू द स्ट्रीम. XYT ओके. एक सेकेंड. हाँ ये रहा ना. Hello. हेलो गाइस, कैसन बा? मजा में सब? Shadows of fate. Here come the fireworks. Fire hazard. मारो मारो भाई, क्या मार रही है भाई? My apologies. Unthinkable. अच्छा वेट, कितने बजे से स्ट्रीम करोगे? मैं अभी कार में हूँ, घर पहुँच के साथ में खेलूंगा. ओ आप कार ड्राइव करो अभी. मैं तो 7 बजे तक खेलूंगा ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल 7 बजे तक नहीं खेलूंगा, उसके पहले भी एंड कर सकता हूँ, लेकिन 6 तक तो निश्चिंत हो जाओ कि 6 बजे से पहले तो मैं एंड ही नहीं करने वाला था यार. उतना तो कुछ नहीं. बाबा व्हाट इज दिस ब्रो? अरे बाबा I can feel breeze. The exit must be go by. This booking will be out here in no time. Okay. वैसे आपको कोई नोटिफिकेशन आया था क्या? क्या लगता है आपको आया था कुछ? स्टीम का नोटिफिकेशन आया था क्या हीरो? जल्दी हो जा, जल्दी हो जा.
थंबनेल चेंज कर लेता हूँ, वो थंबनेल मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली। मैंने सोचा तो बोल रखूँ लेकिन नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। जाओ। डन, चलो प्लीज प्रीमो दे दो भाई। अरे नहीं देंगे भाई ये लोग, प्रीमोस नहीं देंगे मुझे पता है भाई। चले हाँ, ये स्टैमिना रिचार्ज है भाई। My apologies. Stabilize. लग रहा है, लग रहा है। यार ऊपर जाना है ना इधर। नहीं 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 नहीं, इधर नहीं, इधर जाना है भाई। Leave the pit through the exit. Okay. Leave the pit. अरे गाइस पिट को लीव करते हो क्या? What? Order guide you. देख गीगा चैट से कभी पंगा नहीं लेने का, ओके? वरना ऐसे ही खोल देंगे हम तुझे। ओ भाई डन, बच गया भाई। 40 प्रीमोज मिल गए। चलो अब कितने पे, अभी हम एक से देखते हैं। ओके ड्रैगन्स बेन लास्ट टाइम मिला। ओके गाइस देखो अभी 1 है, ओके? 2 3 4 5 6 टाइम पे कितने 40 ओ ना हाँ 40 45 46 47 47 पे ना 48 49। भाई बहुत ज्यादा करना है भाई, मर जाएंगे ऐसे करते करते तो। अब नहीं 45 50 51 52 53। हाँ 53 पे ना, यार 54 हुआ। आजा आजा आजा। Solidify. अरे यार, अरे नहीं मर गया। देखो वो मर गया, देखो वो मर गया। Yes. I've let the pit with the Arthur. Now it's time to head to the well you mentioned. Oh, अभी भी बच्चा है। Nice. अच्छा छोड़ो भाई, ये बहुत बोरिंग है। मुझे भी बहुत बोर हो रहा है, आप लोग भी बोर हो रहा होगा। काजुआ वाला क्वेस्ट करते चलो भाई। काजू वाला क्वेस्ट करते, काजू वाला। ओके गाइस काजू वाला क्वेस्ट करेंगे। काजू जिसको खाने से हमें बहुत सारे काजू मिलेंगे, ओके? काजू मिलेंगे। क्या रुक जा, तो थोड़ा बड़ा लेना दो। हाँ ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, ओके। I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. My husband has gone missing, and I'm still trying to find him.
No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we may. Ah, I see. I कोई thought तो the गायब debt हो गया भाई, collectors वो had come to visit again. ये I'm ये sorry you मोहतरमा have to बहुत see me in चिंता this में है भाई. dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? I'm afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform our search. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be strapped for Mora. हाँ. That's a long story. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but seeing how enthusiastic and excited they made him, I was happy to believe that they were just extremely important to him. Everything was fine when we first got married, but as time went by, things changed for the worse. Uh-oh. What happened? वही मेरा भी क्वेश्चन वही He है. lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse, admiring his weapons even as debt collectors were descending upon our house. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was in a trance. I'm happy he has a hobby, and I'm willing to support him. But making ends meet has to come first. I've tried talking to him about it so many times, but he never listens. On the last day that I saw him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his debts, I would divorce him and take the children with me. ये तो वो भी कर रही है वरना. And that led to an argument. Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow. On most things, he leaves the decision-making to me. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink. After I said those उतना words, ज्यादा he froze स्टैंड किया. and was silent for a long time. When he finally spoke, he awkwardly mumbled that he would pick out a few items to sell. His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? It's important to set boundaries. Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a predicament. And I also don't know if he had actually come to his senses, or if he was simply angry with me. The next thing I heard was that our warehouse had caught fire, and both he and the buyer had gone missing. I see. I understand. हमारी कहानी है हाय. Yuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale, a fire broke out at the warehouse, and both men disappeared. At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price. Hello, it is Satish. But my Welcome to the husband has stream. never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. Maybe he was feeling the pressure from the debts? I don't know. He just disappeared after the warehouse burned down. Perhaps he's too afraid to come home now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. Even though I'm still a little mad at him, we're a family, and I want us to face our family's crisis वो तो together. है ना भाई. एक As long बंदा as he's willing अगर to खाली turn over a पूरी new जिंदगी leaf, I know पैसे we can work दे things के out. एंटिक्स खरीद Please रहा don't है, get upset. लेकिन वो एंटिक्स There could सामने be more to उसके this सामने चल situation गया than तो meets मर the जाएगा eye. ना वो. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, it is quite unusual for this habit to change so drastically over a short period. But the information we gathered from the other side suggests Amenoma Yuya is also a mild-mannered man who would not be likely to start an argument. This situation Detective is getting Kazu a on the little move, which confusing. is the partner Krimes and Paimon. More
like completely mystifying. Let's try a change of scenery and see if we can piece together what we've learned. Rest assured, we'll notify you if we find anything. Thank you so much. I just want him to come home. Nice. Based on the information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. The fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded, though its exact role is a mystery. Do you have any thoughts? Let me think. Okay, guys. Well, Paima was thinking that maybe someone accidentally knocked over an oil lamp and... ये तू छोड़ दे भाई, ऐसा कोई क्लू मिला ही नहीं है. Nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. They must have an argument used to hide the truth. तो वो भी हो सकता है. Interesting explanation. I was also considering this possibility. Amenoma Yuya is an expert on swords. He could have noticed some problematic details about Mr. Nagato's collectibles. Maybe he recognized a blade as a fake, or a well-known stolen item. Either way, after arguing about it, the two men agreed to hide the truth of this matter. They thought a fire would destroy everything. But then the Tenryo Commission began investigating and uncovered some Crime VC incriminating में आ. details, VC? so they fled to protect their secrets. But it's a far-fetched theory. I can't imagine how they would have been able इधर to ही बात reach करते an हैं ना. agreement. VC में क्या है, बाद में One बात fact करेंगे. that I keep coming back अभी to तो Discord बंद is है that मेरा. Amenoma अभी Yuya Discord is स्टार्ट polite नहीं होगा. and well-mannered, while Mr. Nagato is introverted. इधर ही and बात कर passive. लेते हैं. बताओ क्या हुआ. Neither seems like the type of person who is inclined towards initiating conflict. Mr. Nagato, being heavily in debt, is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. The more I ponder it, the more puzzling it becomes. अभी Discord स्टार्ट होने में टाइम लगेगा और मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स चल रहा, तो वो झेल नहीं पाएगा, क्रैश हो जाएगा कुछ तो. Right. Amenoma Yuya lacks a key distinguishing feature of the अरे attack. बोर नहीं होते हो Namely, क्या? that he is Minecraft खेल principally a खेल कर. practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art, not those कहाँ of मैं the Minecraft कहाँ खेल रहा हूँ? ये combat-oriented तो Ishin. जेंशिन है. Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate, it's starting to look तो like जेंशिन खेल रहा हूँ. Minecraft कहाँ खेल ना. Let's keep going, since we've come this far. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to... Okay, but where should we go now? Let's No. head out of the city and check मतलब out बहुत the बारे warehouse. बहुत There's still बारे a chance we may देखा हूँ be able to खेलते हो find some आपको. shreds of evidence. तो पता है कि जय गेम ट्राई करते हो क्या? बोलना क्या चाह रहे हो भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा. आप बहुत बड़े अभी बहुत बार देखता हूँ खेलते हो आपको. हाँ, मैं कभी कहाँ बहुत बार देखता हूँ. अभी लास्ट 2 स्ट्रीम्स मैंने जेंशन की, उसके पहले माइनक्राफ्ट खेल रहा था. तो यार वो पता है कि नए गेम ट्राई करते हो. माइनक्राफ्ट नया गेम कहाँ है? मैं तो माइनक्राफ्ट, वैलोरेंट और जेंशिन, ये तीनों ही तो गेम्स खेलता हूँ. ये तीनों मेरे मेन गेम्स है. उसके बाद मैं कभी कभी नए गेम्स ट्राई कर लेता हूँ. पोकेमॉन यूनाइट, वो मत करो भाई. उसके लिए मुझे फोन से करना पड़ेगा और उसके लिए ऑडियंस ग्रैब करनी पड़ती है. तो यार वो ऑडियंस ग्रैब करने के चक्कर में मैं पूरा भूल जाऊंगा. टफ है. अभी नया तो नहीं ले रहा मैं. Wait, पुराने गेम्स का ग्राइंड फिनिश करना तो उसके बाद. What? This must be another one of those sounds that only you can hear. Yes. Sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament, so... Yes. now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around here somewhere.
तो भाई कोई छुप के बैठा है। अरे देखो ये नहीं There's nothing here. एक It's सेकेंड gone भाई। now, but I can still sense the direction it left in. It felt very much like that ancient presence in Inazuma, the remnants of the Tatarigami. Indeed. But this unexpected spring of inauspicious energy may prove to be of benefit to our investigation. We should remain vigilant and approach slowly. धीरे धीरे चलो गाइस, ये स्लोली चलना है भाई। So it's an underground warehouse. मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ, बहुत सारे बदलाव देखा। नहीं, हाँ ये अभी किया है मैंने, कुछ दिन पहले किया। तो मैं लाइक कम्युनिटी टैब खुल गया, उसके बाद चैनल बैनर चेंज हो गया, फिर वीट्यूबर की जगह ये बोंगो कैट लगा दिया। तो या Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself a lot. It could well be that he was already under the influence of Tatarigami energy at that time. You're someone who would have From noticed. what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters, but most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Their interests become fanatical obsessions. ये क्या है, भूत टाइप का कुछ है क्या? गणेश भाई तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder. कहाँ गणेश भैया कहाँ लिख रहे हैं? कुछ लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। Step back. I'll open the door and take a look inside. That's dangerous. If we don't open this door, we can move no closer to the truth. You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively वो तो है, speaking, रेडन the के स्वॉर्ड से risk here is trivial. ऑलमोस्ट स्लाइस होते होते मैं बचा था, उस टाइम में तूने बचाया था। तो ये काजू बॉय, आई कैन ट्रस्ट यू। जोर लगा के हाय सा, उठा उठा उठा। What's down there? Everything's buried in debris. I can't see anything. डिस्कॉर्ड It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire है, warehouse to डिस्कॉर्ड rubble. पे वो लोग लिख रहे हैं ऐसा कुछ। कि डिस्कॉर्ड मैं भी गया डिस्कॉर्ड पे ना। हाँ आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। अभी तो मैंने डिस्कॉर्ड बंद है और स्टार्ट करूंगा तो सब क्रैश हो जाएगा, गेम ही नहीं चलेगा इससे। Scary. Paima was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump out at us. All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami energy's source left this two ordinary humans, की कौन है? entangled with मैं। the Tatarigami. Yes, let's go. Quiet your mind. कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। जब वो छोटी बच्ची बड़ी बच्ची बन जाएगा तो यू नो समझ में आएगा उनको। वो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये देखो काला काला चीज, देखो काला काला चीज गाइस, काला काला चीज देखो, काला काला चीज। कुछ तो है भाई इधर, क्या था इधर? एक्सक्लेमेशन आर छोटी बच्ची लिखो तब समझ में आएगा आपको। छोटी बच्ची From this point, the trail appears to BACHCHI। split into two. The main source of the इसमें नहीं, Tatarigami इसमें energy जेंशिन। continued on into ओ the distance ये पाइमोन है, गाइड इसकी। and seems to be dissipating slowly. The continued on the onto the distance, but a small remained here and seems to be this way. Two parts to it corresponded to. हाँ, ये ट्रैवलर के साथ घूमती रहती है बस। Look at all those hilly trails. They're acting really strangely. गाइस ये देखो, अब मैं Something क्या seems करना to है be देखो। drawing their attention. Let's take a closer look. Whirling snow. Objective reprise. किस काम की नहीं था, किसी काम की नहीं था। हाँ किसी काम की नहीं है, ये इमरजेंसी फूड है बस हमारी। It's
Look at this और room. बहुत जोर से चिल्ला के बात करती है, which I like. What is it? By the looks of it, a letter written on a piece of torn clothing. अच्छा, The एक ink चीज, is bone dry. It must have been written quite some time ago. अच्छा सुनो, एक चीज बतानी थी, वो है कि रॉजर भैया ने कुछ दिन पहले स्ट्रीम पे आके मुझे ये बताया था कि उनके वीसी में जाना है, और वीसी में आके मतलब उन्होंने मेरे स्ट्रीम पे एक बार देखा था कि मैं पाइमॉन के वॉइस में बात कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे पर्सनली बोला कि कुछ लाइंस मैं पाइमॉन वाले वॉइस से लिख दूँ, मतलब बोलूँ उनको, और वो रिकॉर्ड कर लें। खाना मत पाइमॉन को, इमरजेंसी फूड है भाई, कभी कभी खाना भी पड़ता है। Well, let's take a look. इसकी टंगरी खा लूंगा मैं। And Nagato, I was wounded by Aminoma Yuya. He took my most precious blade. I chased him but could not catch him. I lay down here to rest on account of my exhaustion. I thought that it might croak right here. My stomach kept bleeding. It seems that some strange power has sustained me. Okay, you are non-vegetarian. Yes, I'm a non-vegetarian. Hello, Aaron Eager. Welcome to the stream. Hey, how's going on? Pretty tough because I'm grinding for Nahida, so it's really tough. But right now I'm completing Kazuha's quest, story quest. So yeah. Death Note. कौन सा डेथ नोट? ये डेथ नोट कहाँ से दिखता है? रेड डाइट फैब्रिक है ये, नागोतो ने लिखा है। उसका स्टोरी ये है कि लाइक हम लोग डिटेक्टिव है और नागोतो आर यू डू अकाउंट रिव्यू और नॉट? यस आई डू अकाउंट रिव्यूज, सो ड्रॉप योर यूआईडी in the chat. According to this letter, a conflict arose because Aminoma Yuya wanted to seize a blade belonging to Mr. Nagato. Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could, eventually stopping here to write this letter when his strength gave out. मर गया वो? Where is he? He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. At whatever traces there may have been of his yes, if Aminoma... Right. One sec. I wouldn't be surprised for a practitioner. All the clues that it... What? GF Uinia. Wait. I believe Okay, so. okay. On with the search. Let's go, bros. Okay, Giga Chat account होने वाला है, I guess. 4212916. Let's go. Here and let's go. योइनिया. ओके, पहले गान्यू कर लेते हैं क्या? गान्यू साढ़े तीनों ही कर लेते हैं, तीन ही तो है। अच्छा, गान्यू का 15,000 एच, 80 के अच्छा है भाई, 80 का मस्त है। ओके, रेशियो अच्छा है, लेकिन क्रिट डैमेज और थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करो। अच्छा है, एंड क्रायो डैमेज बोनस दो इसको। ओके, अभी तो कितना है? 85 पे ना, 90 कर लो, तब बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक थोड़ा। प्रोटोटाइप क्रिसेंट नाइस, बट 5 स्टार लेने की कोशिश करो, लाइक एमोस वो या फिर हमायूमी, ये दोनों बोस बहुत अच्छे हैं। ओके, 90 लेवल का तो है ही, लेकिन कोशिश करो। इंग्लिश बोल रहा हो, कहाँ बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। Garen, please try to. I have Hamayumi R2. हाँ तो वो दे दो, बस सिंपल। हामायूमी R2 दे दो इसको, खाली लेवल अप कर लो। हामायूमी बहुत अच्छा चीज है। ओके, अच्छा वो है, आई मीन क्या बोल रहा हूँ मैं, अच्छी चीज क्या बोल रहा हूँ? 2 पीस वांडरर, 2 पीस ब्लिजर्ड है, इंटरेस्टिंग। क्रायो बिल्ड किया है कि हाइड्रो बिल्ड किया है? मीन हाइड्रो है तो ये 4 पीस वांडरर लगाना चाहिए, और क्रायो है तो 4 पीस ब्लिजर्ड। गुड, लेकिन ये 2 पीस लगा है तो आई गेस दोनों के लिए है। आई गेस आई एम अ बिगिनर लाइक 63 डेज। ओह, 63 डेज भी कम नहीं है, लेकिन इंक्रीजेस एलिमेंटल मास्टरी बाय 80।
तो ये अगर कर सकते हो तो 4 पीस ब्लिजर्ड दे सकते हो। इस गान्यू बोट थी। ओह फिर तो ठीक है। व्हाट मोना? एक सेकंड, मोना बिल्ड नहीं है, बिल्कुल बिल्ड नहीं है, मोना बिल्ड नहीं है। ओके 80 करो इसको। क्रिट रेट क्रिट डैमेज बढ़ाओ थोड़ा। ये बिल्ड है क्या? नहीं, एलिमेंटल मास्टरी भी नहीं है। ओके एनर्जी रिचार्ज। ओके बाय ब्रो @नाइटबॉट। अगर नाइटबॉट सुनेगा नहीं तो वो तो क्या करेगा ना। हाइड्रो डैमेज बोनस। ओके थोड़ा दे सकते हो तो दे दो। एंड थ्रिलिंग टेल्स ऑफ ड्रैगन बिल्ड नहीं किया है क्या मोना को? 3 स्टार वाला देके रखे हो वो R5 है। अच्छा है। आई चेंज मोनाज आर्टिफैक्ट्स। हाँ दिख तो रहा है। 2 पीस शिमिनावा है। 2 पीस शिमिनावा कौन देता है? अच्छा तो C2 नाइस। क्या सिर्फ बफ देने के लिए रखा है मोना को? नाइस। ओके एक सेकंड टैलेंट देख लेना दो। 7 हाँ बफ के लिए देके रखा आपने सिर्फ। ओके सिर्फ ओके 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 पोर्ची वेट। तो योइमिया 86 लेवल की है एंड 70,000 HP। अच्छा है 80 के अच्छा है। अच्छा ईयरन प्लीज क्रिट रेट की जगह क्रिट डैमेज दो। योइमिया को क्रिट डैमेज सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ना कि क्रिट रेट। क्रिट डैमेज जितना ज्यादा होगा उतना उतना अच्छा होगा। ओके तो क्रिट डैमेज को बढ़ाओ। क्रिट रेट थोड़ा कम होगा फिर भी चलेगा लेकिन क्रिट डैमेज दो इसको। 200 तक लेके जाओ योइमिया का क्रिट डैमेज। एंड पायरो डैमेज बोनस दो योइमिया को। It's like her CR 34 and CD 221 when I give her build artifacts. लेकिन कोशिश करो लाइक CR को एक ऐसे मेंटेन करो कि 200 भी टच होना चाहिए और क्रिट रेट ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। लाइक 50 के आसपास 50-40 के आसपास लाइक 40 एंड इधर 200 ये सबसे बेस्ट रेशियो पॉसिबल है। और अगर उससे भी कर सकते हो अच्छा तो बेस्ट रेशियो जो 50 एंड 200 उसके ऊपर नीचे थोड़ा चलेगा। थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा ठीक है। एंड पायरो डैमेज बोनस भी दे सकते हो लेकिन इट्स ओके। स्लिंग शॉट R5 अच्छा स्लिंग शॉट इज ओके नाइस। 4 पीस शिमिनावा ओके अच्छा है। एंड C0 टैलेंट्स के अंदर 6 ना ओके छोड़ो। ओके हाँ तो अच्छा है सारे अच्छे अच्छे लाइक ये में अच्छा है। खाली वो क्रिट रेट एंड क्रिट डैमेज का थोड़ा देख लो। I talking about Mona okay not Yoimiya. I also have Rust 4 lol। रस्ट दे दो। स्लिंग शॉट क्यों दिया है? रस्ट दे दो उसको। 3 स्टार तो है स्लिंग शॉट। रस्ट दे दो। I was talking about Mona not okay not Yoimiya। ओ मुझे लगा आप योइमिया इसकी बात कर रहे थे। ये तो अच्छा है। मेरी आईडी कल ले जाऊंगी देखो अच्छे से बिल्ड किया है खोल के। ओके हम देखते हैं आपकी आईडी। 10 वंस पैरेलल अबिस अच्छा है। आई हैव 3 गर्ल्स। ससी बाका यू आर लाइक अ ससी बाका। कोई बात नहीं चलो लेट्स गो एंड सब्सक्राइब कर लो। हम 300 के बहुत करीब है प्लीज कर लो। 300 करवा दो। 300 पे पता है गिव अवे होने वाला है। ओके होने वाला है स्पॉन्सर्ड है तो या दैट्स अस ब्रो दैट्स अस। ओके ये तो आपका ये रहने का ये मेन अकाउंट। यस एक सेकेंड वेट मुझे अभी याद आया। हाँ मुझे अभी याद है आप आ चुके हो चैनल पे। ये आपका मेन अकाउंट है ना। हीरो XT ना। हाँ लेट्स चेक। जोंगली ओके 34। अरे टैंक बिल्ड है क्या?
फिर तो आप फिर भी नहीं आ पाओगे। अच्छा है भाई, जियो डैमेज बोनस नाइस। एलिमेंटल बिल्ड है और थोड़ा टैंक टाइप का, राइट? स्काईवर्ड बाप रे, ये क्या है? एटलीस्ट द टेनेसिटी एंड पेट्रा दो, या फिर 4 पीस पेट्रा दे दो, या फिर 4 पीस टेनेसिटी दे दो, कुछ भी दे दो। एक क्या खिचड़ी क्यों बना के रखी है? एक ग्लैडिएटर, एक ये क्या है, इसका नाम भूल गया, क्रिम्सन विच ऑफ फ्लेम्स, एक ब्लिजर्ड, एक ये क्या है, टेनेसिटी ना, आई गेस ये टेनेसिटी है ना, टेनेसिटी है ना, मैं भूल गया, खुद ही भूल गया भाई। डोमेन ऑफ ये इससे मिलता क्या है भाई? Is it टेनेसिटी है? गेस नॉट, आई एम नॉट श्योर। ओके हाँ पेट्रा ही है। ओके मैं भूल गया। ऑलरेडी सब्सक्राइब, डोंट वरी। ओ थैंक यू। और ये देखो ये है टेनेसिटी। सबकी खिचड़ी बना क्यों रखी है भैया? हीरो भैया सबकी खिचड़ी मत बनाओ, ठीक से खेलो, ठीक से। 8-7-4 अच्छा एलिमेंट, अगर ये एलिमेंटल बिल्ड है तो ये क्या है? आर्टिफैक्ट टिक करो अपने, कुछ भी आर्टिफैक्ट मत दो, सेट बोनस इज इम्पोर्टेंट। ओके ये रिट्रेट बाय इतना स्काईवर्ड्स प्राइम देख के तो रखा है ठीक है, लेकिन एलिमेंटल बिल्ड के लिए इतना तो आई डोंट थिंक सो लगता है। नॉर्मल से काम चल जाता है भाई। बाओखांग लेकिन आपके दोस्तों भाइयों बहनों जिन जो भी है उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ, जिससे 300 हो जाए और आपको ये मिल जाए, क्या बोलते हैं उसको, टीम। He seems to have stayed here for a long time. Why here? Is there anything special about this place? I'm not sure. But on closer examination, I sense that the aura may have lingered here at several different points in time. रुक जाओ guys. What happened? It's no use hiding anymore. मिल गया भाई। अरे बाबा कितने samurai senses guys. It's you, at last. Don't tell me ambush था। So it is the same guy from before. What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? Indeed, there should be no enmity between us. If it is Ame-no-Meyuya that stands before us. But what if instead of facing Ame-no-Meyuya, we are in fact facing the blade in his hand? मतलब मेनू में आया हुआ ये ब्लेड है कि क्या है भाई? ये कुछ तो भाई अलग लेवल के थ्योरी है भाई। एक सेकंड रुक जाओ, मैं काम कर रहा हूँ इस वजह से मैं लाइक माउस के पास नहीं हूँ, बस हेडफोन कनेक्ट करके रख। वेट ओके चलो। Now that you mention it, it is giving off a strange light. Whoa! Surely you don't mean... Are you serious? Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state of mind, and more recently using the sale as a means to affect, or rather as a means to occupy, Ame-no-Meyuya's body. बाप रे बहुत डेंजरस है Sharper भाई। than I thought. You've already deduced the truth of the matter. मतलब ये स्वॉर्ड की जो एक्चुअल है वो इसके ऊपर of the Ishin tradition. Ishin I was blade। his pride and joy. In me, he placed all his hopes and dreams. ये देखो इसका मतलब इस ब्लेड के अंदर कोई मतलब जो एक्चुअल मिस्टर नागोटो है उसने इसको खरीदा था। ओके
उसके बाद मिस्टर नागोटो का मेंटल स्टेट को बिगाड़ा और उससे उसने एनर्जी ले ली इसलिए वो एक इंसान की तरह बात करने में ये लगा और उसने इस स्वॉर्ड्समैन का लाइक ब्रेन ऑक्यूपाई मतलब माइंड कंट्रोल कर लिया और उसके बाद इसको मारने मतलब काजुआ को मारने आया है। भाई सोचो अलग लेवल की थ्योरी है भाई, ये अलग लेवल की चीज है। Descendant of the Kaidahara clan, you should be able to guess our greatest regret. Kind of I regret. presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Raiden Gokaden? At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. So, मतलब swords can become conscious and control people. The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one, but in all other respects an ordinary weapon. That gave me the opportunity to take action. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. Bhai sahab, consciousness. To face the full force of the Raiden Shogun's ये by the way Ishin blade हमें मिलेगा क्या guys? ये quest करने से Ishin blade मिलेगा हमें ये quest का करने पे. So Amenome Yuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using them? Kill them. Hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired, or injured, or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. Yes. After I returned to Inazuma, हमें मिलेगा ये, अरे मिलेगा, अरे भाई मजा आएगा भाई. Ishin blade भाई, Ishin blade इसके specs देखने पड़ेंगे. At long last, देखना पड़ेगा भाई, अगर मिला तो अच्छा है भाई. By Amenoma Yuya's body, I have found you, and by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. Oh, ये काजुआ का mind control करेगा. Against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi, there can be no other to serve as my host for what is to come. Hitotachi. Give your body over to me. Bye. Tyler, welcome to the stream. Hi, bro. Hey, ये ले. अरे क्या? तेरी मैं रुक जा. ये देखो डैमेज देखो भाई. चलते डैमेज. Do not stand in my way, or I will strike you down too. चुप रह तू. Lost? I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He is but a puppet that can be replaced. Then we'll smash you into pieces. The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. अरे बाप रे, blackmail. If I were to lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall endure. भाई कैसे मारेंगे इसको? By any means necessary and any medium available, I shall return and fulfill my destiny.
अच्छा बाय द वे ये स्वॉर्ड जो है अगर ऐसा कुछ प्लॉट लाइन होता कि ये काजुआ का माइंड कंट्रोल कर लेता उसके बाद ट्रैवलर वर्सेस काजुआ होता कितना मजा आता भाई एनिमो पावर वर्सेस द ट्रैवलर मजा आता भाई प्लेएबल कैरेक्टर होता फिर भी मजा आता उसके बाद नहीं फिर तो काजुआ मार जाता क्योंकि ये मार देगा जो भी होस्ट होगा अपना हाँ फिर तो कुछ तो ऐसा करना है जिससे लाइक ये ब्लेड की कॉन्शियसनेस को या मार दे या फिर हाँ एक और चीज हो सकती है मतलब ये स्वॉर्ड हम पकड़ ले और हमारे ब्रेन हमें कंट्रोल करने लग जाए लेकिन ट्रैवलर इसकी कॉन्शियसनेस हमारा कॉन्शियसनेस और इस ब्लेड का मतलब फाइट होगा ऐसा कोई अलग रिलम में जाके वो भी एक चीज है लेकिन ये स्टोरी क्वेस्ट है तो उतना कुछ नहीं घुसा सकते इसके अंदर लेकिन देखते हैं क्या होता है Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art. But from Ishin your art. movements, I sense only hatred and arrogance, as well as a thinly veiled mania and तो despair. टेल मी अभी काजुआ साधु बाबा बन के इसको शांत कर देंगे फिर तो टट्टी भाई As I've mentioned before, the forms of Ishin art convey the user's thoughts and feelings. Since the blade is currently possessing Aminome Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe I am your only hope. Are you trying to claim that I am helpless without you? यस On his deathbed, he passed to me all of Ishin Art's secrets. In that regard, why would I ever need your help? Because all of that is in the past. I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner. Now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. You were trapped. After all the time that's passed, you have grown weak. To the point that you are now unable to acquire a new host without making physical contact. Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of never touching his collectibles. Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Aminome Yuya and make your escape. नाइस भाई And what of it? Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong it threatens to overwhelm you. You were determined to fulfill your maker's ambition whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. भाई कोई स्पॉइलर मत देना Each ओके step you have taken has come at a great cost. I think you realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. But the भाई way I अच्छा है see भाई it, what began as an ambition has long since become a delusional fantasy. इसके बाद नाहिडा वाला क्वेस्ट करेंगे क्योंकि नीलो और साइनलो का करने का मन I'm नहीं just कर रहा one step away from achieving my goal. You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make this arduous journey, you committed countless Countless atrocities and atrocities showed a blatant disregard for human life. Even if you इसका were to मेंटली sever वीक that कर रहा है divine भाई link, लेकिन इसकी मेंटल है is this कहाँ truly the ब्रेन outcome का है that इसके your maker अंदर would have desired? You. अरे ब्रेन Sure, तोड़ you रहा है भाई inherited the secrets of Ishin art. काजुआ को पता भी है Even कि as you वो made your journey to honor this लाइक legacy, जैसे you स्वॉर्ड को treated जस्ट the ones टच who करवा needed you देगा as mere tools to do काजुआ your bidding. उसके ब्रेन में आ जाएगा How could काजुआ you के ब्रेन में आ possibly जाएगा वो unleash the full potential लेकिन of इसलिए Ishin तो art काजुआ उसको when you मेंटली act वीक in कर रहा है perfect ये देखो accordance with the सेलेस्टिया principles ये of देखो harmony between सेलेस्टिया the blade and its bearer. देखो इधर से दिखता है You blabbering fool. I must achieve my goal. This was his life's dream and the very purpose for which I was brought into being. I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you you also also underestimate underestimate my my resolve. resolve And you should face reality. let's go Easy for you to say. Facing reality offers me nothing. I have no need of anything
anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection, and certainly not your so-called reality. It is pointless to argue further. Descendant of Kai, the Hara clan, if you wish to save this then man, offer me your body in exchange. offer me your body in exchange. How stubbornly you stick to your wayward path. I do not believe for a second that you can challenge the almighty Shogun in your current state. So let us make a bet, and I will put your strength to the test. What? Surely you're not planning to agree to his demands. Very well. Then find yourself some enemies with whom you wish to cross blades. A taste of my power will more than convince you. ये Once मुझे we've dealt with them, मुझे दो, मुझे मारना है इसको. Shukaku. And as for your end of the bargain, if you lose, you must release Amenoma Yuya from your control. I accept. Don't do this, Kazuha! This is the only way to the cursed blade's strength, the power of the Tatari. Even if we have a chance here to save an innocent victim, I am willing to. All right, Disdain fine. for me betrays your woke now. अरे बाप रे, काजुआ का वो वाला चीज देखने को मिलेगा भाई. Evil form देखने को मिलेगा. मजा आ रहा है. I'm okay. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. It's all right. So far, this was as I expected. I will. Thank you. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, it cannot unleash its true power. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. He shouldn't last long in an intense combat situation. Wait a minute. Paimon remembers hearing about something from the adventure. Gaming, अरे total gaming भैया, welcome to the stream. Tsukasa clan abandoned that secret base. It's been held by Ronin ever since. Well, What about the blade says he'll let Amenoma Yuya trail us silently. Although he hasn't regained his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. Are we sure this is a good idea? It's a pretty treacherous journey. अरे नहीं चलो. Fine. Just be careful. Just be careful. Let's go. चलो गाइस, काजुआ का दिमाग, मैंने कुछ जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिला भाई. मजा नहीं आया उतना. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि काजुआ बिल्कुल करप्ट बन जाएगा, उसके बाद हम हाथापाई करेंगे उसके साथ, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ. उल्टा काजुआ को अपना वो गुड बॉय वाला चीज अभी भी है भाई. मैंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था. वो देखने में मजा आता, काजुआ बिल्कुल इविल बन गया, वो देखने में मजा आता भाई. Unsolicited, and all the more valuable for it. Kaju boy is very good. That's why. Let's go into the domain. ये देखो मूंछ की तरह क्यों दिखता है? ये नाक है, ये दो आंखें हैं, ये उसका कुछ तो है, ये मुंह है, ऐसा कुछ तो दिखता है. ये देखो हाथ में देखो, हाथ में देखो, हाथ में देखो. थंबनेल ब्लर्ड है, मेरी आंखें खराब हो गई. देखना पड़ेगा. वो मैंने कैसे ही कॉपी कर लिया भाई. Let's get down to business. Into the wind. ए काजुआ का ये अच्छा है भाई. It's my lucky day.
wind knows me. Falling leaves, adorn my night. One with nature. Oh, this is really cool. Hey, काजू इतना cool है, किसी ने मुझे बताया क्यों How नहीं? are you feeling? You okay? I'm all right. The blade is performing largely as I expected. Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to use. Though he's making every effort to persevere, I do not think he can last much longer. Something else on your mind? How strange. Controlling Rather to than me, trying to to control match me, my fighting He's rhythm. instead trying to match my fighting rhythm. Let's keep going. काजू के टाइप हो रहा है वो. फ्रेंड्स, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हारा चैनल शेयर किया. 300 हो जाए. थैंक यू वेरी मच. लेकिन उनका अगर कंटेंट पसंद नहीं है तो क्या करोगे? बताओ. Let's get down to business. Into the wind. Say no more. One with nature. Let's get down to business. आ जाओ. सब इधर आ जाओ. सब मेरे पास आओ. आ जाओ. Into the wind. As one with wind and cloud. As one with wind and cloud. एक सेकंड, इसका ये बिल्ड देख लेने दो. The blade? I can sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more difficult for me to wield. He cannot hold out much longer. If he keeps persisting, he will likely break apart at any moment. But what would that do to Amanome Yuya? Please I will be show checking. Naida build. He also says Naida he does not have build? a plan. He's नहीं है भाई, मेरे पास नाइडा नहीं है. मैंने बस फोटो लगाया इसका थंबनेल पे. नहीं है सच्ची. ये मेरा नाइडा अभी तक आया ही नहीं, तो नाइडा बिल्ड दिखाऊंगा कैसे मैं आपको ना. एक सेकंड, लेट्स चेक बिल्ड कैसा है. ईश 71 पे क्यों रखा है? 80 कर देते हैं. 21,000. अच्छा, ग्रेट रेट देके रखा है. एलिमेंटल मास्टरी है. ये क्या बिल्ड है? ये बेकार बिल्ड है भाई. ईएम दो तगड़ा करके. क्रिट रेट, क्रिट डैमेज हटाओ, थोड़ा कम कर लो. वो चलेगा, ये जितना ही चलेगा. डैमेज थोड़ा बढ़ा लेते हैं. अच्छा, ये ईएम ज्यादा चाहिए मुझे. मैं इसको ईएम बिल्ड रखता. प्राइस्ड इशिन ब्लेड. देखना पड़ेगा भाई. अच्छा है. 4 पीस वेरी डिसेंट. अच्छा है. one with nature. ओरे भाई. Into the wind. Cheap tricks. The wind knows me. Clouds high. The birds call. Wind strider. Like this. Are you okay? It looked like you were... Yes. The sheen's grown a bit dimmer again. It doesn't look anywhere near as impressive as it did at the start. Perhaps this time we'll finally have a chance to see his true form. True form? What are you talking about? Huh? What the? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. Piece of junk. Is Raiden Shogun worth pulling or shove? देखो, वो डिपेंड करता है आपकी टीम के ऊपर. आपको कौन सी टाइप की टीम चाहिए. ओके, अगर आपको नॉर्मल टाइप की टीम चाहिए, लाइक अगर आपको एक इलेक्ट्रो कैरेक्टर चाहिए तो रेडेन सबसे बेस्ट है. अगर आपको कोई एनिमो कैरेक्टर चाहिए तो मेनली डीपीएस चाहिए तो काजुआ ले लो एनिमो का, और अगर मेन चाहिए तो शाओ ले लो. ओके. If you choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. It barely needs stating anymore.
Your ambition is a flight of fancy. I finally figured out why it was that you agreed to my Thanks. You तो wanted to टीम reach को a देखो, state of आपकी harmony टीम with में me. है क्या क्या, वो बताओ So मुझे। perhaps then you would still उसके be बाद able मैं to देखता wield हूँ command और सोचता हूँ कि किस, उसके But बाद बोलोगे regrettably, we are nothing alike. आपको कौन सा कैरेक्टर स्विच करना I है, will never रेडन understand your रेडन obstinacy and रेडन को cruelty, किसकी जगह nor देना can है, I empathize with the one who तो made you. वैसे आप कर सकते The हो। only okay? one who truly understood you had already passed away by the time you were born. Huh? What's that supposed to mean? Here they are! Take them down! Where do they keep coming from? Yup, we can help this time. Don't worry, I'll use my own blade. It's Blade, just why? more. Love for हीरो वाइटी, वो आप लोग हीरो वाइटी की वजह से आ रहे हो। थैंक यू हीरो भैया, थैंक यू वेरी मच। अरे 87 है क्या? अरे बाप रे ये है, ये काजुआ का ऐसा ब्लेड क्यों है भाई? थैंक यू हीरो भैया। One with nature. इतनी जल्दी आ गए भाई। The wind knows me. You fought way better with your own sword. PN Ansh, welcome to the stream. Rohit, welcome to the stream. You Hey, are Tare true भैया, Anya thank you, in thank you. flesh and in spirit. No one knew anything of my story throughout my Abhishek. travels, कौन nor है? did I tell it कौन to सा anyone. गेम है You सर? are the first person to know the truth. सार मतलब what do I you mean by thought सार? that if I could ये है achieve Genshin true Impact. harmony with you, perhaps But in this too, you have failed. indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Too much Yes. time has passed. My physical state is मेरा poor, नाम and अभिषेक है। without ओह proper हाँ, आपने maintenance, बताया था एक बार। I can only पूरा disguise नहीं। my true appearance behind an outer sheen. Yours is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. I studied this game. I shall I shall never never reach reach. that level of glory. भाई ये ब्लेड खुद बात कर रहा है, सोचो। I studied this game 2 months ago. This game is so addictive. I am at year 55 now. NIT. I have only 1 DPS. I know. बाप रे, 2 months में इतना ग्राइंड कैसे कर लिया? कितना दिस गेम इज सो एडिक्टिव। वही मैं देख रहा हूँ, मतलब हमने बहुत ग्राइंड किया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उतना ग्राइंड नहीं करता, क्योंकि इस गेम का मेनली जो स्टोरी है वो सबसे बेस्ट है। इसी वजह से मैं स्लो गया हूँ बहुत। इस वजह से मैंने अपने लिटरली एआर को लेवल अप नहीं किया, वरना अभी एआर को लेवल अप करता तो मैं 56 या 57 पे जाता, लेकिन अभी मैं 50 पे ही हूँ। मतलब वो इतने एक्सपी जमा हो गया है भाई। एक लेवल जाने के लिए 20,000 की रिक्वायरमेंट है, मेरा 1 लाख होके बैठा है उधर। तो अभी तो कितना मैंने देखा नहीं, अभी और भी बढ़ गया होगा। वो मैं बात कर रहा हूँ 1 मंथ या 2 मंथ पहले की, अभी तो देखना पड़ेगा। Actually, this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. What? Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. Bond, Plus, guys, bond. in the moment that I James most Bond. needed it, I received aid from another power. Skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. Ishin art. ये तो इसका There is दिमाग फट something गया भाई else I सुन must के। tell you. काजवा की बातें सुन के Though your दिमाग फट गया maker may इसका। not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Tatarigami is a malevolence from the ancient past. It is the source of your mania and savagery. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by क्या कर रही हो? Tatarigami was क्या बोल रहे हो constantly तैनोस trying भैया? to seize You control know of your that body. I'm a dude, not a I sensed it, you but know। I couldn't बाकी change का it. तो राइम कर लो It is किसी के an साथ। integral part of
my consciousness. काजुआ स्टोरी I क्वेस्ट resisted काजुआ का its स्टोरी क्वेस्ट कर रहा temptations हूँ because I wanted to save Amenoma Yuya. मेरे हीरो भैया ने रेड मार दिया I do हमें not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. हमें हमें I हमें feel a किसी great और को sense of मारना regret चाहिए for you. लेकिन हीरो भैया ने हमें मार Since you दिया तो embarked थैंक on यू a हीरो journey भैया bound for a destination you For were the raid. destined never to reach. The moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true मैं नहीं potential. मानता वॉइस तो गर्ल सी And जैसी yet there was लगती है no way for you to turn your So back on this original. ambition. आज ही You क्यों have बोल रहा है managed ये for a सब long आपको time. यू It नो is the true source यू of नो your मी वेल despair. ओके He gave मैं me सच्ची में एक बॉय हूँ my life, my form, my consciousness, and purpose. How could I possibly deny him his wish? I said to him, "Do not worry. From here on, I shall forge your legacy." फॉर्ज योर लेगेसी How could I? ये रो रहा है भाई deny स्वॉर्ड my भी word? रोते हैं भाई गाइस गाइस स्वॉर्ड रोते भी हैं ओ Even कर that bet is now settled. ओ कर रही है भाई देख रहे हो इसको देखो भाई पाइमॉन को अरे हीरो भैया इनको पता है मैं बॉय हूँ मेरी टांग खींच रहे हैं बस और कुछ नहीं Let's give him some time to reflect on things. हेलो ब्रो When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. A bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. His breaths were weak, and his life आप married किससे him. बात कर रहे हो A newly forged किससे blade बात lay कर रहा हूँ at मैं his side, listening attentively to his हीरो final हीरो words. हीरो जो हीरो एक्स वाई टी है ना वो That was the Blade's memory, wasn't it? Indeed. While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. The Ishin art had been dealt a devastating blow by the desertion of its best smiths. He कॉन्शियसनेस नहीं spent था the वो rest एक of बस his life in the forge, not to vent his frustration and hatred, but to atone for his actions. He कोई felt an intense कॉन्शियसनेस regret नहीं at था being tricked by the ब्लै Fatui, but he मुझे could तो never चैट में और again कोई return to दिख his ही नहीं homeland. रहा है His आप sole अंधे हो wish गए और was to डॉक्टर को one day दिखाओ return जाके his single proudest ओबे creation हाँ back to the land of his birth. ए So चैट he को देखो instructed उधर his sentient ऊपर blade to फिल्टर्स find होगा a उधर way लाइव back चैट to पे the सिलेक्ट करो museum, तब no दिखेगा matter आपको how long मुझे लाइव or चैट पे how दिख रहा है hard the टॉप journey. चैट पे नहीं दिख रहा All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith, that they were still worthy of being trusted. So that's the true story. But भाई सैड है after थोड़ी that, the blacksmith's intentions were worked by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. पे अब दिखा Right. हाँ अब समझ रहे हैं I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original master. तो अंश वेलकम टू द No स्ट्रीम one was there to correct its अंश errors जी when it was losing its way. Shame it's too late. ये now. पीएन अंश और अंश आपका ऑल्ट अकाउंट है ना Yes. ऑल्ट अकाउंट है ना वो It is too late. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that fleeting तुम और moment हीरो at the dawn of नुबा his journey. क्या He बोल seems to रहे हो have कुछ calmed भी तो down. लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का Let's go and check in. लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए वो थोड़ा अलग था ओके ओके वो अच्छा जोक नहीं था बिल्कुल भी ओके थैनोस भैया अच्छे जोक क्रैक करो उल्टे सीधे I नहीं once told him that I would pay any price to fulfill, but darkness and slaughter. Not only did I fail to fulfill, हीरो तुम finally seeing निब्बा reality निब्बी हो clearly. नहीं वो जोक हटाओ since आप we वरना agreed मैं to हटा the दूंगा terms of the bet, but I still kept so. Hey, now you're adding yours into the mix too? Jeez, don't push your luck, mister. It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will still release Amenoma Yuya as promised. My physical form, as well as कहाँ the से knowledge दिखता हूँ I मैं possess, खुद ही should निब्बा still हूँ be of ये some कैसे value निब्बा to me. निब्बा निब्बा हो जाएंगे तो और he's really like a both dude okay
Should we give him a उनका chance? आवाज सुना है मैंने भाई, Let's hear it. वो बहुत बड़े डूड है, गीगा चैट टाइप की आवाज है उनकी, तो या When I was first forged, my maker was already terminally ill. He told me that he had wanted me to have the grandest opening battle. ओपनिंग बैटल। After that, he never rose from his sickbed again. Nor have I ever had the chance. भाई तो हमारे to टॉप prove अप्रिशिएटर्स myself में in से that sense. ये My भी fights आ were गए, devoid of any noble meaning. रॉजर भैया। तो रॉजर भैया ने लास्ट टाइम लाइक गूगल पे, मतलब गूगल पे किया था मुझे, या वो निब्बा तुम, मैं भी निब्बा कुछ भी, और वो निब्बा नहीं है, कुछ भी मत बोलो थैनोस भैया, कुछ भी कुछ भी, वो बहुत बड़े हैं, आपसे भी बड़े हैं इनफैक्ट। And who would be the opponent? आप बड़े जरूर हो लेकिन अभी भी आप छोटे हो, ओके थैनोस भैया, इन आपका मेंटालिटी छोटा है, वो जोक था, ओके। He must have plenty of reason. Understood. I see. He used my body to inflict harm on others. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. I do not wish to be a mere victim in this story. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryo Commission. Thanks for your help. Who knows how this would have ended without your Let's intervention. go। 300 हो गए क्या? All right, then let's move on. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here. Yes। In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. सेरेमोनी भाई, सेरेमोनी। चलो भाई फाइनली कंप्लीट हो गया, अब नाइडा वाला क्वेस्ट करेंगे, उसके बाद नीलो वाला करेंगे, ओके गाइस। आज स्टोरी क्वेस्ट कंप्लीट कर देंगे, पूरे सारे के सारे कंप्लीट कर देंगे। रुक जाओ आप, रुक जाओ, जस्ट रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ सबको आज। रुक जाओ रे, रुक जाओ बाबा, रुक जाओ रे, रुक जाओ, रुक जाओ रे बाबा। तो ये ब्लेड नहीं मिलेगा क्या हमें? कल सुबह हो जाएगा 300। कल सुबह क्यों, आज रात को ही हो जाएगा मुझे जितना लगता है। इतने स्पीड पे, अभी तो 274 में था, इसके इतनी जल्दी 88 पे आ गया। मुझे लगता है आज रात ही हो जाएगा, लगता है। आपको क्या लगता है? This reminds Paimon a bit of the Crux Clash. Squash। ओ क्रूक्स क्लैश, मुझे क्रक्स क्या है? क्रूक्स क्रक्स। Yep, we still can't let our guard down. Even now, Paimon Paimon has a was sneaking suspicion that Blade hasn't told us everything. Still, मुझे भी लगता है थोड़ा। even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel a teensy bit sorry for him. Yes। Ready? Ready? Almost मैं नकल कर सकता हूँ पाइमॉन की। All right then. लाल लाल आंखें। Successor of Ishin art, Kaidahara Kazuha. Successor of Amenoma art, Amenome Yuya. Honored to cross blades with you. It is my honor also. चलो भाई, फाइटिंग भाई, फाइटिंग। Into the wind. One with nature. अंश तुम मुझे जानते हो ना? The wind knows me. Into the wind. As one with wind and cloud. Thank you for the experience. पर थैंक यू अंश भैया एंड And सनी एनवी, रोहित brilliance. एंड और The कौन sense of थे? savage cruelty has और कौन completely है? faded away. ये द एंड same sense of इनका ऑल्ट determination अकाउंट का remains नाम भूल strong. गया मैं।
You also हाँ fought क्यू well. एन या फिर कुछ तो I'm sure he relished थैंक यू the फॉर experience. सब्सक्राइबिंग थैंक यू वेरी There are a मच few things that I shall मुझे leave him to सच्ची tell में you himself. लगा नहीं था कि I एक दिन must में इतने बढ़ apologize जाएंगे to बट you थैंक यू for सो all that मच has transpired. You need not seek my forgiveness. Nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late for all of that. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will Not see my wish. transgressions as mine alone and not let them stain the legacy of Ishin art. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin... I beseech you, please understand this. Yes, I too trust Mr. Kaedahara to do the right thing. Thank you, successor of Amenoma art. This blade has also told me that he has another wish. You would He would like to visit the Amenoma Amenoma smithy. smithy. Maybe we can go back there together. What does he want to go there for? मरने जाना है I'm not sure, but I think that all this is about to come to an end. हाँ मरने जा रहा हूँ एक सेकेंड नास्ची Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. I'm back. Okay. I guess stream end करने का time आ गया लगता है लगता है चलो ऊपर जाके एंड करेंगे ओके स्ट्रीम को आज इतना ही करने रहते हैं ओके आज 6 बजे के पहले ही बंद करना पड़ा सॉरी बट करना पड़ता है कभी कभी करना पड़ता है मैं कल बताऊंगा क्यों आज नहीं बता सकता क्योंकि वो आज नहीं कर सकता You have returned. I am sorry to have troubled you. Let's go. A prized Ishin blade. But I have some... Really? Yes. Badly... And now that I think I know what... What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? In your ear? Brain में बोल रहा है वो. He said he wants to take control of me for a brief moment. What? No way! Hasn't it learned its lesson? तू चुप रहे भाई Paimon. To fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything nefarious. I have decided to let him do it. The decision is... There's nothing we can say to change your mind, huh? Thank you. Okay. I am ready. Let us begin. Please, stay true to your promise. Let's go. देखते अभी क्या बोलेगा ये. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean... Yes. The cost is my entire consciousness.
दिया? You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if इसको force कर रहा है. to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. तोड़ दिया? Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. सच्ची में तोड़ दिया भाई? Kagotsurube. अरे नहीं, ये न्यू है भाई, न्यू शॉट. लेट्स गो. ये हमें मिलेगा, ये हमें मिल गया ऑलमोस्ट. लेट्स सी क्या होता है. अपने कॉन्शियसनेस ने नया तलवार बना दी उस तलवार को रिफॉर्ज करके. So, that's why he said it had to be done in that order. His consciousness will disappear forever. मैं चैट नहीं देख सकता हूँ क्या ना गाइस? अभी मेरा चैट गायब हो गया. ओके, Kagotsurube थोड़ी देर के लिए. Ishin. It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. Only in the Bury final this name, moments guys. before his consciousness faded. मैं ये थोड़ा इमोशनल था, थोड़ा इमोशनल था. मतलब उसने अपनी कॉन्शियसनेस को पूरा खत्म कर दिया. Wanted to fulfill his maker's wish. The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. Speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes The than remnant of see the him punished for it. defeated. Gods are nothing to stroll at. I understand. Perhaps this is a flaw in my personality. I've always been captivated by grand aspirations. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me. Just as the sight of those who fought to repeal the Vision Hunt decree did. Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. After everything I've seen, perhaps I these guess pursuits ये fascinate होगा. me a little ठीक more से. than they should. Oh, Kazuha. I will continue to support you from this point on. Let's check क्या Know होता that you है. will have my assistance whenever you need it. Wait, shouldn't we also go update Kujo Kamaji? इस कुजो कामाजी. Oh, You're right. yeah, I guess. We need to tell him We about need the to tell him findings of our about our investigation. investigations. And it's also time to give him a response to the offer he also made. time. हाँ, ये तो है. Then let's check. Wait a second. ये करके हम एंड कर देंगे. ओके, कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? क्राइम्स. ये व्हाट द ये कैसे? Krimes is trying to enter their world. है? कोई तो है, किसी ने मेरा नाम कोई तो ये कोई तो है. रुको, इसको पकड़ने दो मुझे. इसका आईडी से मैं पकड़ लूंगा. रुक जाओ, ये फ्रेंड है मेरा. वेट, लेट मी चेक. ये है कौन? फ्रेंड तो नहीं है. हेलो. Boats are made for transferring commodities back and forth. ये इसको शॉर्ट बना के मैं डालूंगा. रुक जाओ ना गाइस. सोच रहा हूँ इसको शॉर्ट बना के डाल दूंगा भाई. I met myself in GenshinImpact. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? The Krimes white tea.
ये देखो पकड़ा गया भाई, पकड़ा गया। देखो ये देखो, ये क्या है? All the world एक we सेकेंड see रुको, is but a backdrop of constant motion. एक सेल्फी। Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? हाँ कैसा है? एक्सएन Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, boats are made for transferring commodities back and forth. बाबा Guys! Osmanthus wine tastes the same as I remember. ए भगवान, लेफ्ट कर गए। वाओ, Who share? सो नाइस, सो कूल। अच्छा चलो गाइस, स्ट्रीम एंड करने का टाइम आ गया। I met myself in Genshin Impact। ये चीज आएगा, ये शॉट आएगा। ओके, इसका शॉट आएगा पक्का। ओके, इसका शॉट पक्का आएगा विद बोंगो कैट। आई एम बोंगो कैट। ओके, मैं सोच रहा हूँ मेरा एक्चुअल जो होता है ना, क्या बोलते उसको, डीपी चेंज कर लो यूट्यूब का। बोंगो कैट रख लूंगा। चलो मिलता हम नेक्स्ट स्ट्रीम के साथ। ओके गाइस, थैंक्स फॉर कमिंग, आई रियली अप्रिशिएट इट फॉर सब्सक्राइबिंग। एंड हम 288 हो गया आज। 290 अगर रात को हो जाए तो अच्छा है। 300 कल करेंगे या फिर परसों, या फिर कभी भी कर सकते हैं, कुछ कभी भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो इतनी। मिलता हम नेक्स्ट स्ट्रीम के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड sayonara, बाय बाय गाइस, बाय बाय।